अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, होप यू आर डूइंग वेल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हम ऐसी बार बार मिलते रहें। लेट्स टॉक पाकिस्तान, लेट्स टॉक अबाउट पंक्चुएशन मार्क्स टुडे। अगर आपको प्रॉपर्ली इंग्लिश लिखना सीखना है तो यू मस्ट नो कि पंक्चुएशन मार्क्स कितने होते हैं, कौन से होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनके क्या आपस में डिफरेंसेस होते हैं, कैसे कैसे कब कब कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो टुडे। देयर आर 14 कॉमन पंक्चुएशन मार्क्स यूज्ड इन इंग्लिश: फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमीकॉलन, क्वेश्चन मार्क, parenthesis, brackets, and quotation marks, hyphen, apostrophe, dash, exclamation mark, ellipsis, and slash. Let's start with full stop. A full stop is also known as a period. It denotes the end of a complete declarative sentence. For example, the dog ran under the fence. यहाँ पे एक complete declarative sentence जो है वो complete end हो गया है, इसलिए इसके end पे हमने full stop को use किया है. So the next is question mark. A question mark also ends a sentence, but it is an interrogative sentence or a direct question. For example, where are you from? Why didn't you like the story you read last night? ये questions हैं, इसलिए इनके end पे हमने question mark use किया. Next is quotation marks. A quotation mark is used to indicate a dialogue, a speech or words spoken by someone else. For example, I don't like Sabah, said Sophia. क्योंकि ये सोफिया ने बात की है इसलिए हमने इसकी बात के बाहर quotation marks use किए हैं. और डबल के अलावा सिंगल quotation marks होते हैं that are not apostrophe. They are used to for a quote within the quote. For example, Jill told the mother Jack ran up the hill and he said that he was going to fetch the ball. यहाँ पे हम जिल बता रही है कि जैक ने क्या कहा है, इसलिए जिल की जो बात है उसके बाहर हमने डबल कोटेशन मार्क्स लगाए और उसके अंदर जैक की बात है इसलिए उसके हमने बाहर सिंगल कोटेशन मार्क्स को यूज़ किया है. Next is apostrophe. It is also used to show that certain letters have been omitted from a noun, and it is also used to show the possessive form of a noun. For example, I am and do not, इनको हम combine करके बीच में apostrophe use करके लिखते हैं. ये इसमें से हमने letters को omit किया इसलिए ऐसे लिखा है. Next is Sophie's hair was blonde and curly. यहाँ पे हमने Sophie के hair की बात किया, मतलब nouns possession की बात की है, इसलिए हमने बीच में apostrophe s use किया. And same as he joined Charles Army in 1962. Next is a comma. It is used to insert a pause into a sentence, and it is also used to separate ideas, phrases, numbers, dates, or even alter the structure of a sentence. For example, he went to the library, comma, and then she went out for lunch. इधर हमने टू डिफरेंट फ्रेजेस को सेपरेट किया इसलिए हमने इसके बीच में कॉमा यूज़ किया, और इसी तरह से नेक्स्ट में हमने डिफरेंट चीज़ों को सेपरेट किया इसलिए हमने उनके बीच में कॉमाज यूज़ किए, लाइक 2 शर्ट्स, अ पेयर ऑफ पेंस, एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज़ अ कॉलन. कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, एन एग्जाम्पल, सीरीज और एक्सप्लेनेशन. इट कैन ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, एंड इट कैन बी यूज टू शो एम्फसिस ऑन समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, दे डिडंट हैव टाइम टू वेस्ट, colon, already late. You have two choices, colon, finish the work today or lose the contract. Next is a semicolon. It is used to separate two independent clauses while showing connection between them. For example, Richard always slept with the light on, semicolon, he was afraid of darkness. ये दोनों आपस में connected हैं इसलिए हमने इनके बीच में semicolon use किया. Same as my daughter is a teacher, my son is a doctor, इनके बीच में भी हमने semicolon use किया. Next is exclamation mark. It is used to show a strong emotion or a command. It can be used in the middle or at the end of the sentence. For example, yeah, that's fantastic. Johnny, don't say that. Next is hyphen. Hyphen and dash are different punctuation marks. Hyphen is used to join different words together into a compound word. And it is also used to link prefixes to words. And it is also used to indicate word break. For example, I work part-time, pre-enlightenment. The 20th century is very different from previous eras. ये सब hyphen से हमने अलग किए हैं. Next is dash. Dash is a bit longer than hyphen. There are two types of dashes that vary in size and uses. First one is N dash. It is shorter and used to indicate the range or connections. For example, 1965 to 1987, and he took Chicago to New York train. Next is M dash. It is a bit longer and used in place of other punctuation marks to enhance or emphasize the conclusion of a sentence. For example, she gave him her answer, no. Next is ellipsis. It is usually represented by 3 dots or 3 sterics. It is used to show there is an omission of some words or letters, and it is also used to cut short a sentence. For example, to be continued,
Next is slash. It is also known as forward slash और oblique dash. It has so many uses and examples. For example, हम इसको इंटरनेट के एड्रेस में यूज़ करते हैं. 1/3 इसको हम इस तरह से डिवाइड करके लिखने में यूज़ करते हैं. डॉटर ऑफ शॉर्ट फॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं. 80 माइल्स पर आवर्स पर के तौर पे यूज़ करते हैं. रीलोड और रिफ्रेश और की जगह पर भी हम स्लैश को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ पैरेंथेसिस. इट इज़ यूज टू सप्लाई फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन. दे कैन बी रिप्लेस्ड विद कॉमाज एज वेल. उससे हमारे सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, केट हु इज़ मैट्स वाइफ लाइक्स टू गो फॉर वॉक. ये हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है केट की, इसलिए हमने उसको यूज़ किया है. नेक्स्ट इज़ ब्रैकेट्स. या दीज आर यूज टू क्लैरिफाई समथिंग और फॉर सम टेक्निकल टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, शी मिसेस स्मिथ अग्रीज दैट कैट्स आर बेटर देन डॉग्स. ये भी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, इसलिए हमने ब्रैकेट्स को यूज़ किया है. होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी. सो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.